Good morning, students. Myself, Professor Nasir Gavli, and in the today's lecture, we see the next point, that is Antimorkovnikov rules, or this Antimorkovnikov rule is also known as a Mayo and Kharash effect, or it is also known as the Kharash effect, and it is also called as peroxide effect. Okay, in the last lecture, we see the Markovnikov rules, and according to the Markovnikov rules, that is the statement is like that: when the unsymmetrical alkene is react with unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent is attached on that carbon atom which consists of less number of hydrogen atom अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, सो अपन ने कल देखा था कि अनसिमेट्रिकल अल्किन जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड इससे रिएक्ट करता है, तब जो हैलोजन रहता है वो कौन से कार्बन पे अटैच होता है बेटा? दैट इज द कार्बन एटम विच कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन atom around the carbon carbon double bond. Now in the today's lecture we see the next and very important rule, that is Anti-Markovnikov addition or Anti-Markovnikov rules. Okay, so in today's point we see the next and very important point, that is Anti-Markovnikov rules, or it is also named as Kharash. It is also named as Kharash and Mayo effect, or it is also known as peroxide effect. इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? That is peroxide effect. So जो कल अपन ने मार्कोनिकोव रूल देखा था बेटा, उसके टोटली अपोजिट ये रूल है. That is the statement of this rule is like that, that is when unsymmetrical reagent is react with unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent is attached on that carbon atom which consists of more number of hydrogen atom around the carbon carbon double bond in presence of peroxide. It may be hydrogen peroxide, it may be sodium peroxide, or it may be benzoyl peroxide. So simple statement है. आपने मार्कोनिकोव रूल में क्या देखा था बेटा कि वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एब्सेंट था, लेकिन इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या रहेगा? प्रेजेंट. तो यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, सो द रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकोव रूल्स. ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं आप, that is when unsymmetrical alkenes is react with unsymmetrical reagent, then the negative part, then the unsymmetrical reagent, that is like HX. ओके, HX. तो यहाँ पे X पे क्या रहेंगे बेटा? That is negative. That is then negative. Then the negative part of the reagent is attached on that carbon atom which consists of more number of hydrogen atom around carbon carbon double bond in presence of
पर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ये आप स्टेटमेंट में ऊपर भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अपन ने इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड, ओके, is called as Antimorkovnikov rules, is called as Antimorkovnikov rules. Okay, so this is the one of the important rules. अब यह इसको स्टेटमेंट को आप डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्केन्स रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक हाइड्रोजन हैलाइड in presence of peroxide, then negative part of the reagent is attached on that carbon atom which consists of more number of hydrogen atom around the carbon double bond, and that rule is called as a Antimorkovnikov rules. For example अपन यहाँ पे देखेंगे बेटा, that is when CH3 CH double bond CH2, you know about that, it is a propene, when react with हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ पे याद रखना एक सेंटेंस कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 इट फॉलो द एंटीमॉर्कोनिकॉफ रूल्स। ओके, सो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपको एंटीमॉर्कोनिकॉफ रूल शो करता है। ओके, और एडिशन जो रहती है हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड की, इट इज अकॉर्डिंग टू द Markovnikov rules. Okay, so यहाँ पे when propene is react with hydrogen bromide in presence of, यहाँ पे आपको दिया होगा बेटा like per oxide। ओके, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी दिया हो सकता है, सोडियम पर ऑक्साइड दिया हो सकता है, फिर बेंजोइल पर ऑक्साइड भी आपको यहाँ पे दिया हो सकता है। सो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज प्राइमरी or normal alkyl bromide, that is normal propyl bromide, which is the major product in this reaction. So see here product क्या मिलेगा आपको बेटा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br। मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एंटीमॉर्कोनिकॉफ रूल्स नेगेटिव पार्ट का अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैक ऑन दैट कार्बन एटम व्हिच कंसिस्ट ऑफ more number of hydrogen atom around the carbon double bond, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में और ये हाइड्रोजन लेगा और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, दैट इज द IUPAC नेम, और या इसका दूसरा नाम कॉमन नेम है बेटा नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ओके, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। सो दिस इज द वन एग्जांपल व्हिच कैन बी सीन इन द टुडेस लेक्चर। नाउ सी हियर सेकंड एग्जांपल, व्हेन isopropene, okay, so see here when CH3 double bond CH2। अब देखो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, IUPAC नेम आता है इसका 2 methyl prop 1 ENE, 2 methyl prop 1 ENE, या फिर इसे अपन बोलते हैं आइसोब्यूटीन। ओके, व्हेन आइसोब्यूटीन और 2 methyl propene इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड in presence of peroxide, now this negative part attach on that carbon atom which consists of more number of hydrogen atom। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, अगर ये अटैच हो 5 तो अपन को 4 करना है, इसलिए डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू द हाइड्रोजन एटम। सो अब यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा मेजर प्रोडक्ट दैट इज CH3 CH एंड CH3। ओके, इसका नाम क्या है बेटा, दैट इज आइसोब्यूटेन। ओके, IUPAC नेम आता है इसका 2 methyl propane, that is a major product. Okay, so this is the important reaction which can be studied in the today's lecture. Okay, अब अगले लेक्चर में अपन देखेंगे बेटा important reaction, that is addition of sulfuric acid on symmetrical as well as unsymmetrical alkene, and then we see the
ozonolysis reaction. Thank you very much.